calculation of equilibrium concentration. ठीक है, the concentration at equilibrium. How are we going to calculate it? So before I move into the questions, I will tell you the type of questions that will be asked. Now this is completely numerical based topic. इसमें आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा, है ना? There will be no like theory type of questions from here. So purely numerical type of question. So first thing is that in this question आपके पास given क्या क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं. Before writing the given, let me reshare my screen. ठीक है. So first of all, I will tell you in the question you will be given a few things. ठीक है. What you will be given? You will be given the Kc or the Kp. आपको equilibrium constant या फिर equilibrium constant in terms of concentration or pressure will be given, and initial concentration of a species. ठीक है. Initial concentration of a species will be given, and this species is usually reactant. ठीक है. These two things will be always given. Now something will be may be given and some and may not be given. That is the reaction. ठीक है. अगला तो ये सबसे पहले आपको समझना है कि आपको ये चीज दी हुई है कि नहीं दी हुई है. Kc, Kp and the concentration of any one species, and usually that species is going to be reactant. The other thing, the value of Kc and Kp will be given, है ना? And the other thing is that reaction. You should know what reaction is happening. So for this, I will take a reaction that is A plus 2B gives C, or rather I should write 3C. ठीक है. Gives 3C plus 4D कर लीजिएगा. ठीक है. नो रिएक्शन यहां तक आपके पास दिया हुआ होगा. इसके बाद you need to make a table, and that table is known as ice table. हम लोगों ने ice table पढ़ा है? No, you have not learned ice table, ना? ठीक है, ध्यान से देखिए जरा. What is ice table? We have initial, change, and equilibrium. ठीक है. एंड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड तब क्या होगा? ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम. सो इनिशियली यू मस्ट हैव बीन गिवन सम अमाउंट. ठीक है. आपको कुछ कुछ अमाउंट दिया रहेगा. फॉर एग्जांपल ए के लिए हम ले लेते हैं. लेट सपोज यू हैव बीन गिवन 2 मोल्स और 4 मोल्स सम नंबर. ठीक है. 2 3 4 5 आपने ले लिया. यूजुअली प्रोडक्ट्स आर they have zero, like products की concentration नहीं ली जाती initially, but you may be given the concentration of product also. This may happen. ठीक है. So whatever number is given, in order to show whatever number, I am writing here something. Please understand that these are numbers, है ना? This is the amount of A given. So what is the amount of A given? Let us suppose we have been given concentration of A को हम ऐसे लिख देते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ सी को हम ऐसे लिख सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ डी को हम ऐसे लिख लेते हैं. दिस इज द गिवन अमाउंट. इनिशियली आपको क्या क्या है, एक स्पीशी या ज्यादा स्पीशी का दिया रहेगा. इनिशियल कंडीशन वुड बी गिवन टू यू. ठीक है. नाउ चेंज कितना होगा दैट वी हैव टू अज्यूम. सो अकॉर्डिंग नाउ चेंज इज ऑलवेज अज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. Initial is given, you are not going to in initial you are not going to apply anything from the reaction. Reaction का आपको कुछ भी नहीं देखना है when you are writing the initial values. When you are writing the change, then you will look at the reaction and you will say, okay, fine. The things that we have been given is 1 mole of A, it will react with 2 moles of B, it will give 3 moles of C and 4 moles of D. So now the stoichiometric coefficients are important. Please make a note of this. ठीक है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम कह रहे हैं. This is going to be main thing in plenty of questions in NCERT. ठीक है. So change, when you are writing change, A का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल. तो B का 2 मोल, and we are getting 3 moles of C and 4 moles of D. If we generalize it, then I can say
when X moles of A reacts, then it will react with how many moles of B? 2 moles of, no, twice. It will give 3X and 4X moles of D. Now, since A ka concentration kam hoga because A is reacting, I will put up a negative sign here. B is also reacting, the concentration will decrease. I will put minus 2X. Now the concentration of C is increasing, that is why a plus sign here, and D is increasing, that is why there will be a plus sign here. Does this change make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Anyone has any doubt? Please let me know. ये बिल्कुल प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है, आइस टेबल में. Now, equilibrium, what will happen? Initial and change. So initial is A minus X will be there in what? At equilibrium. Then B minus 2X will be there. And C minus, sorry, 3C plus 3X and D plus 4X will be there. ठीक है, इतना complicated नहीं होगा, but I just want to show you guys the importance of stoichiometric coefficient in change. Change में stoichiometric coefficient का importance. Not at initial. Initial में what is given in the question without even looking at the reaction. You will write the values as it is. ऐसा नहीं कीजिएगा कि B का कंसंट्रेशन 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है ना. आई एम टेलिंग these are the mistakes that students generally make. Next is, once you have done with this, then you will write whatever Kc Kp कुछ भी दिया रहेगा आपको. Kc is equal to the concentration of product C square, concentration of D square, no, my bad, concentration of C cube, concentration of D to the power 4, concentration of A as it is, concentration of B square. Now, if you see here, the concentration of A, B, C, D at what? At equilibrium. अब यहाँ पे भी गलती क्या करते हैं बच्चे? They in the value of Kc, for Kc only, the concentration of C, they write this value. But this is the initial value, not the equilibrium value. So you cannot write that value. What you have to write? You have to write the equilibrium value. So Kc will be equal to concentration of C plus 3X होल क्यूब. देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, हम बस आपको बस एक बार बताने के लिए बस कर रहे हैं, ठीक है ना. कंसंट्रेशन ऑफ डी प्लस 4X होल 4, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस 2X होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज हाउ, यहां तक आपको आना चाहिए. इसके बाद फिर मैथ स्टार्ट हो जाएगा, है ना. इसके बाद फिर मैथ स्टार्ट हो जाएगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड वंस वी start doing the questions. So please write this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you are done. Waiting for Khadija, Khadija and Rishita. Please raise your hand once you're done.
Waiting for Khadija and Khudeja. Just waiting for Khadija now. Those who are done, they will write this question. See you guys. Now in this question, जो चीज हम लोगों को like I told you there are some givens that you will see. तो चलिए बताइए जरा, what are the given? बोलो भाई, गिवन. नो वन इज सेइंग एनी कुछ भी गिवन आपको नहीं नजर आ रहा है. लुक एट ना व्हाट वी हैव रोट कि व्हाट शुड बी व्हाट वुड बी गिवन. टेल मी गाइस, रीड द क्वेश्चन, टेल मी AC व्हाट इज गिवन. equals to 0.14. What Rishita, can you repeat it? I did not hear it. Kc equals to 0.14. KC is 0.14 and anything else given? The initial concentration of ICl will be 0.78. Yeah, very good. Initial concentration of ICl is equal to 0.78. ठीक है. Now we have the reaction. 2 ICl in equilibrium with I2 plus Cl2. We will write initial, change and equilibrium. ठीक है. Initial for ICl is what? 0.78. ठीक है. Do we have any I2? No. Do we have any Cl2? No. Then what will be the change for ICl? Change will be how much? वो आपको बनाना पड़ेगा. डोंट लुक एट क्वेश्चन नाउ. अब आपका एक्स टेबल जैसे हो गया ना, यू डोंट हैव टू लुक एट द क्वेश्चन नाउ. हो गया सवाल खत्म. Look at the table and tell me according to the reaction what will be the change. अरे बोलो भाई, ऐसा नहीं चलेगा ना. टेल मी गाइस व्हाट विल बी द चेंज. किसी को So नहीं आ रहा है. I2. आई. हाँ बोलिए ऋषिता. कीप योर माइक ऑन ना. आप लोग माइक क्यों ऑफ कर देते हैं? कीप योर माइक ऑन. यस ऋषिता.
So will it be like a What? See, bring your thoughts completely, है ना? If you are going to be so hesitant, then you will not be able to learn. Yes, Rishita, tell me. so something divided by 0.78 whole square, I think. Look at the change for the previous reaction that we. What was the change? It had a term, ना? क्या था उसमें? We have done na a plus 2b gives 3c plus 4d. In that, see what is the change, and then tell me what will be the change here. Only the change, not the equilibrium. Change में बताइए. minus 0.78. नो भाई, क्या हो गया आप लोग को? देखो तो, ऐसे जवाब तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. दिस चेंज, इसमें ए का कोई टर्म आया है? लाइक दिस चेंज इज हैविंग, इट इज नथिंग रिलेटेड टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. द चेंज इज ओनली रिलेटेड टू द रिएक्शन. व्हाट रिएक्शन इज गिवन? ट्राई टू थिंक एंड टेल मी. 0.78 आएगा ही नहीं. आया है क्या यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ लिखा है क्या हमने यहाँ पे? No, sir. सो व्हाट विल बी चेंज? minus अरे 2x हाँ, करेक्ट, वेरी गुड. फॉर I2, Plus 2x. No, plus why x 2x? Why x? because Because there's the coefficient is x. I कोएफिशिएंट mean इज 1. 1. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. डर गई थोड़ा सा ऋषिता को, लगा सिर को क्या हो गया. ठीक है, Cl2 में क्या होगा? वो हम डांटते इसी वजह से ना, थोड़ा सा दिमाग में अब जोर लगाया है ना. अब समझ में आया ना ऋषिता? ये सुनो. Your screen is black, sir. I cannot see it. स्क्रीन इज ब्लैक. व्हाट दैट? आमना, कैन यू सी इट? it is clear. Yes, sir. अच्छा, लाइक कब से इट्स नॉट विजिबल राइट नाउ और? No, right now, sir, I don't know what happened. अच्छा, अब विजिबल है, देखिए जरा. No, sir, I can't see it. ओह, यू कैन यू सी एनीथिंग एल्स? स्क्रीन में, स्क्रीन, आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया है. No, just your screen is black. Shall I? I'll leave and join again, sir. अच्छा अच्छा, प्लीज, ओके. ओके, हमारा Cl2 में क्या होगा? Plus x. प्लस एक्स. ठीक है. इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे? इनिशियल और चेंज. इनिशियल इक्विलिब्रियम मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कितना होगा? तो इनिशियली हमारे पास 0.78 था, और उसमें से 2x रिएक्ट कर गया. सो वी आर रिमेनिंग विद दिस मच. हाउ मच I2? सो वी विल हैव x मोल्स ऑफ I2 एंड वी विल हैव x मोल्स ऑफ Cl2. मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, just give me a second. Yes, sir. Now I ऋषिता, can see. अच्छा. So see, equilibrium में Rishita, 0.78 we initially had. Change means this much is reacted, and so that is why at equilibrium after very long time, that means we'll have this many amount of ICL. I2 में we will have X amount of I2 and we will have X amount of Cl2. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Yes. ठीक है. अब क्या लिखेंगे हम लोग? We will write Kc is equal to product upon reactant. What is the product? Concentration of I2 multiplied by I2 Cl2 Cl2 divided by ICL. only ICL. 2 ICL raised to 2. स्क्वायर बोलते हैं उसको, भूल जा रहे हैं क्या आप? ICL square. Yes, sir. स्क्वायर, यस. ठीक है, चलो जाइए हम ऐसे. लेकिन मेरा देखिए,
करते वो कंटेंट का डिमांड रहता है, तो हम थोड़ा सा तेज और ऊपर नीचे बोल देते हैं, ठीक है ना। मेरा मूड वूड खराब नहीं है, आई एम ऑल प्रेट, आराम से जवाब दीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, है ना। Kc इज ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो Kc में जो भी वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी, इक्विलिब्रियम से आएंगी। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, टेल मी। इट इज नॉट अ नंबर, इट इज, बट इट इज समथिंग ना, क्या है बताइए, कितना है। अरे भाई, मतलब हम Yeah. नहीं चाह रहे। जी आमना, 1. वन का है भाई। Uh, X. सॉरी सॉरी, व्हाट अर्शिता। X एक्स होगा ना, हाँ ठीक है, एक्स। Cl2 के लिए भी क्या होगा, एक्स into X. इंटू एक्स। अच्छा रिश्तेता, जस्ट टेल मी वन थिंग, आर यू यूजिंग स्पेस बार टू स्पीक। Yes, sir. डोंट यूज दैट ना। आई एम पहले भी शायद हमने कहा है ये चीज ना, Okay, sir. ठीक है। बिकॉज वो आधी बात आती है, इट इज वेरी इरिटेटिंग, लाइक आधी बात हमको सुनाई देती है, फिर आधी बात फिर से पूछना पड़ता है, ठीक है। सो टर्न योर माइक ऑन प्रॉपर्ली, टर्न योर माइक ऑफ प्रॉपर्ली, ओके रिश्ता, Yes, sir. ठीक है। डिवाइड बाई ICL, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ICL। 0.78 minus 2x. यस वेरी गुड। जनरली आप इस चीज को मिस्टेक यहाँ पे ये करेंगे, आपको गिवन कंसंट्रेशन ICL का कितना था, 0.78, तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा उसी को प्लग इन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज डोंट डू दैट, एंड दैट विल हैपन इफ यू डोंट मेक द आई स्टेबल, ठीक है। अगर आप आई स्टेबल नहीं बनाएंगे आप, तो ये मिस्टेक आपसे होगी। सो व्हेन यू मेक द आई स्टेबल, इट इज प्रीटी मच विजिबल दैट द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर ICL इज 0.78 minus 2x होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट 0.14, AC is 0.14, ठीक। नाउ वी कैन सॉल्व दिस, वी हैव टू सॉल्व फॉर x 0.14, it is equal to x square divided by 0.78 minus 2x whole square, ठीक है। so I will take root on both the sides, so this will become, इसको हम ना 14/10 का रूट ले सकते हैं, 14/100 का, to remove the decimal point, make sense। Yes, sir. so x square divided by 0.78 minus 2x whole square. Now, root 14 divided by 100 will be equal to the root of x square is x. The root of 0.78 minus 2x whole square is what? 0.78 minus 2x. ठीक है। Now what we can do? अच्छा एक सेकंड, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, I have removed the root of 100, 14 root will be still there. Make sense, इसो नो, ठीक है। अब देखिए जरा, in order to calculate the root of any non-perfect square, please ध्यान से सुनिएगा, there is a formula that is the root of x is equal to x plus y multiplied by 2 root y. What is y? Y is a perfect square just before x. That means x के पहले जो perfect square आता है ना, that is y. So what is a perfect square before 14? Tell me. 14 से पहले कौन सा perfect square आएगा? 14 से पहले perfect square? Tell me guys. 9. 9, वेरी गुड, है ना। तो रूट 14 अगर आपको निकालना है, सो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, इट इज इक्वल टू x लिखिएगा, दैट इज 14 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 9, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 23, 2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 6, so 23/6 will be equal to how much? Calculate कीजिए, 3 is a point, then how much is remaining? 53, 8 is a, so approximately 3.8 आ रहा है। तो and you use a calculator and see, check कीजिए जरा, what is the root of 14?
How much it is there in the calculator? Same, sir. 3.8. 3.8 ही करीब आ रहा है ना? 3.8 एग्जैक्ट आ रहा है या फिर कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे है? No, no. क्या है? 3.8333. 3.8 आ रहा है 14 का। थोड़ा कम आएगा, 3.7 करके कुछ आएगा। ठीक है, बट स्टिल इट विल, यू कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 3.8। ओके, सो नाउ व्हाट टेबल तो 3.8 multiplied by 0.78 minus 2x is equal to 10 will go that side, you will have 10x। ठीक, now 3.8 into 0.78, ठीक है। If you multiply these two numbers, this will approximately be equal to 3। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इट विल बी 2.96 ऐसे करके नंबर आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। सो 3 एंड 3.8, 3 पॉइंट, हाँ, 3.8 into 2x will be equal to 7.6x, that is equal to 10x। So you can write minus 7x will go there, we'll have 3 is equal to 17.6x, so x will be equal to 3 upon 17.6। Calculate this value, 3 upon 17.6 will be equal to how much? यहाँ पर है 0.17, दैट्स द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग, है ना। अब आपके पास जब x आ गया ना, दैट इज द चेंज, एक्चुअली द मेन चेंज जो हो रहा है, देन यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, है ना। सारे की स्पीशीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड विद x ओनली। सो एट इक्विलिब्रियम, तो I2 का लिख लेते हैं कंसंट्रेशन, I2 concentration will be equal to the concentration of Cl2, because दोनों की सेम वैल्यू x ही है, that will be equal to 0.17 and it will be molar, and the concentration of ICl is equal to 0.78 minus 2x, so this will be equal to how much? 0.78 minus 2 into, that will 0.34। ठीक है, this will be equal to how much? 0.44 molar। मोलर है ना, क्या ही है, मोलर ना, या मोलर। Make sense everyone? Yes or no, please tell me। Yes, sir. Copy this down। Raise your hand once you're done।
Waiting for Amna and Khudeja. ठीक. Moving on, we have a very similar question but with a type of a twist. And this is the reason questions are very important in this particular chapter. ना theory मतलब इस topic में theory हो चुका है, but in each and every question you will see that there is something new to learn. जो आपके पास ये टॉपिक है ना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन, दिस इज द ओनली थ्योरी दैट यू हैव टू लर्न. चेंज, बाकी कुछ तो और है नहीं यहाँ पे. चेंज लिखने आपको आना चाहिए. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट यूज मैथमेटिक्स, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चंस में आ सकते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, see here guys, at 700 Kelvin equilibrium constant for the reaction H2 plus I2 gives to HI is 54.8. So they have given us the equilibrium constant, that is K, which is equal to 54.8. Now, let's read the question very properly. If 0.5 mole per liter of HI, that means they have given us the concentration of HI is present at equilibrium. क्या दिया इन्होंने? 0.5 mole per liter of HI is present at equilibrium at 700 Kelvin. ठीक है. तब what are the concentration of H2 and I2? इन्होंने क्या दिया हुआ है? Concentration of HI at equilibrium दे दिया है. ठीक है. This is something again what new. Now you will write concentration of HI at equilibrium is equal to 0.5 moles per liter. Now they are saying what are the concentration of H2 and I2? Concentration of H2 and I2 assuming that we initially started with HI. They are saying that what is the concentration of H2 and I2 at equilibrium निकालना है आपको, है ना. Assuming that we initially started with HI, that means अगर आप HI के साथ start किए तो H2I2 तो होगा ही नहीं वहां पे, है ना. So they are asking the at equilibrium and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin. ठीक है. तो 700 Kelvin की बात है. The reaction that they have given the Kc for is this reaction H2 upon H2 plus I2 gives to HI. But the reaction that is actually happening is what? Is this reaction HI initially लिया हमने and it is breaking up to get H2 molecule and I2 molecule. Now this HI is what? 2HI, है ना? This is 2HI. Now the K for this reaction will be equal to the inverse of this particular K, 1 upon 54.8. अब देखिए अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी. द प्रोडक्ट एंड जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट हो गया, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट हो गया. तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या हो चुका है? रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट. सो दिस इज व्हाट इट इज द रेसिप्रोकल, है ना. तो जो K होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 54.8. दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. यस और नो, प्लीज टेल मी. आपने रिश्ता ये समझ में आया हाउ इट इज 1 अपॉन 54.8 फॉर दिस रिएक्शन? Yes, sir. ठीक है. चलिए मूविंग ऑन. नाउ अब आपके पास यू डोंट नो व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HI, है ना. आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है, बट यू नो व्हाट, यू नो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. ठीक है. यू नो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 0.5. अब आप मतलब इनिशियल आपको चाहिए भी नहीं. आप इनिशियल मान लीजिए यहाँ पे कुछ मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, मान लीजिए A है कंसंट्रेशन. ठीक है. चेंज कितना हुआ? -2x हुआ. इक्विलिब्रियम में कितना आया? A -2x. ना 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 ना, 0.5 मोल दैट इज गिवन. मोल पर लीटर को मोलर लिख सकते हैं. डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. दिस डजंट मैटर. आपको इक्विलिब्रियम चाहिए था मेनली. ठीक है. इनिशियल का तो इनिशियल की तो जरूरत भी नहीं पड़ती इफ यू हैव द इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. नाउ H2 जो है 0 और ये भी 0. हाँ, चेंज के मामले में जरूर हम बोलेंगे यहाँ पे चेंज आएगा माइनस. दिस इज आई स्टेबल ना, ICE. दिस इज -2x, दिस इज +x
and this is so concentration of H2 is what at equilibrium x and I2 का भी concentration कितना है that is equal to x. Now please इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद we will write this K it is equal to the concentration of H2 multiplied by the concentration of I2 divided by the concentration of HI squared. This is the expression for K. Now I will plug in the values. The concentration of H2 is X. The concentration of I2 is X. The concentration of HI is given, that is equal to 0.5, and I can square it here. The K that we have is 1 upon 54.8. 1 upon 54.8. अब आ जाते हैं इधर. Now you can see here we have 1 upon 54.8 is equal to x square upon 0.5 का x. Think I should write it like this: 5 by 10 whole square. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. क्या ख्याल है? Everything fine till here? Yes or no? ठीक है. Now what I will do, I will send this whole denominator that side. तो आपके पास आ जाएगा क्या? You will have 5 divided by 54.8, 5 का square, 54.8 into 10 का square. That will be equal to x square. Now I will take the root. ठीक है, हम पूरे का यहाँ पे रूट ले लेंगे. So what will be remaining? अच्छा एक काम सही रहता अगर इसको हम 54.8 को उधर भेज देते हैं. ठीक है, 5 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 54.8 का 54.8 ही है. दिस थिंग होल थिंग विल बी रूट. तो 5 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5, 10 का रूट हो जाएगा 10 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 10. दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर का रूट हो जाएगा x एंड विल बी रिमेनिंग विथ 54.8. Now 54 is very near to 49 है ना, right? Yes or no? So we can calculate 54.8, y is 49 divided by 2 into 7, 14. 54.8 plus 49 कितना हो जाएगा? 54.8 plus 49, that will be equal to 103.8. This whole thing is divided by 14. कितना आंसर आ जाएगा बताइए जरा. 7 जा 7 जा ठीक है. 7.4 7.5 के करीब कुछ आंसर आएगा ना. 7.45 के करीब कुछ आंसर आएगा, देख लीजिएगा जरा. ठीक है, 7.4 लिख रहे हैं. सो 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू x into 7.4. So you can say that x is equal to 5 upon 74. Yes, 7.4 will be multiplied by 10, will be equal to 74. So 5 upon 74 is equal to how much? This is equal to 0.67. That is what x. x आ गया यानी कि आपके पास you are having the concentration of H2 and I2 also. ठीक है, तो concentration of H2 कितना हो गया? Which will be equal to concentration of I2, that is equal to 0.67 molar. Please copy this down. Raise your hand once you're done.
Raise your hand once you're done, guys. Okay, only Amna is done. Waiting for Khadija. Khadija, okay, Rishta is also. Just waiting for Khadija and Khadija. Just waiting for Khadija now. Khadija, raise your hand once you're done. ठीक है, इसके बाद एक और सवाल लिखिए, दैट इज रिलेटेड टू प्रेशर, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। Write this down. Kp is equal to 0.04 atm at 899 Kelvin for the equilibrium shown below. What is the equilibrium concentration of C2H6 when it asked at 4 atm pressure and allowed to come to equilibrium? ठीक है, see here. So same thing. First of all, we are going to write what is given here. So we have been given that is equal to 0.04. Then we have what else? What is the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in a flask at 4 atm pressure and allowed to, है ना, तो initial pressure 4 atm किसका क्या बोलते हैं, है ना? मेक सेंस? yes or no, please tell me. बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से पढ़ते हैं, ये 4 atm प्रेशर किसका दिया? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 when it मतलब C2H6 is placed in a flask at 4 atm pressure. That means we have inserted C2H6 at what? At 4 atm pressure. तो यहाँ पे अब आपके पास जो this is P initial of what? P initial हम इसको क्या लिखेंगे? Of C2H6. It is equal to 4 atm. Now we have the reaction C2H6 that is in equilibrium with C2H4 plus dihydrogen. So we have same things, initial, change and equilibrium. So initially how much
C2H6 we are having 4 atm. This is 0 and this is 0. The change that will happen when we have pressure, तो हम ना minus P use करते हैं. So minus P and C2H4 में you will have plus P and यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा plus P. So equilibrium में the concentration is what? Pressure is 4 minus P और C2H4 का plus P and यहाँ पे भी plus P है. So now we can plug this value in the Kp expression. Kp will be equal to how much? Kp will be equal to the pressure of C2H4 multiplied by the pressure of H2, that is the products, divided by the pressure of C2H6. Now we have Kp that is equal to 0.04. 0.04, that will be equal to P for C2H4 and this is same, that is P into P divided by 4 minus P. ठीक है, 4 minus P. Now, in order to solve this equation, it will be easier if I do 4 upon 100 will be equal to P square upon 4 minus P. Now, when I will change here, so it will be 4 into 4 minus P is equal to 100 P square. Now I can write 4 4s are 16. 16 minus 4P equal to 100 P square. Now I can write this quadratic equation as 100 P square plus 4P minus 16 is equal to 0. Now you have got a quadratic equation. जिसमें से what you can do, you can solve it. But solve करने से पहले this is A ना, 4A into C minus B. हाँ ठीक है, इसको 100 ही रहने दीजिए, there is no problem. So in order to calculate for P, I will write minus B plus minus root over B square minus 4AC divided by 2A. ठीक है, this is formula. Minus B. What is B here? B is 4. So minus 4 plus minus root under B square 16 minus 4A into C. बड़ा नंबर आ जाएगा फिर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव होगा. ठीक है, C is negative, so this will become positive. 4A 400 into 16 है ना, 400 into 16. So 16 4 का कितना होता है? 64. 6400 will be there, right? So 16 plus 6400 divided by 200, 2A. Now minus 4 plus minus root over 6416. 6416. ठीक है, डिवाइड बाई 200. क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? इसको 6416 को हम लोग 6400 मार्क है ना, आई कैन काउंट दिस एज 80 ओनली. ठीक है, इसको 80 काउंट कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80 ही होगा इसका, रूट भी करेंगे तो. सो वी हैव व्हाट, माइनस 4 प्लस 80 अपॉन 200 और एक एक्सप्रेशन आएगा आपके पास -4 माइनस 80 upon 200. So this value will be becoming negative, so I can neglect it as pressure cannot be negative. The value that we should be getting is this one. P is equal to 76 divided by 200. 76 का आधा कितना होता है? 38. 38 divided by 100, that will be equal to 0.38 in ATM. ठीक है, तो आपके पास क्या बोला था? C2H6 कितना होगा पूछा ना? We can calculate all the pressure. So at equilibrium, the pressure of C2H6 is equal to 4 minus P, that is equal to 4 minus 0.38. This will be equal to how much? 3.62. Then the pressure of C2H4 will be equal to 0.38, that is P ना. देखिए वहाँ पे क्या है? P है. This is equal to what? 0.38.
and same is what the pressure of H2 also. ठीक है, so please copy this down. Once you are doing this once again ना, एक बार फिर से आपको करना पड़ेगा, अच्छे से कीजिएगा इन सब चीजों को. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna, Khadija, and Rishita. Waiting for Khadija only now. Khadija, let me know if you're not done. Chili. After this, you will write the next topic, that is the relationship between, or a relation between delta G naught and K. तो एक रिलेशनशिप होता है that is delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. Q is the reaction quotient that we learned in the previous class. Now at equilibrium, nothing happens. No change is happening at equilibrium. There is no apparent change in any of the parameters or the physical properties that we know. Macroscopic properties में कोई change नहीं होता है. That is why at equilibrium, the delta G will be equal to what? It will be equal to 0. And at equilibrium also, Q becomes equal to K. That is why the expression will become 0. It is equal to delta G naught plus RT ln K. RT ln K. Now delta G को अगर हम इधर भेज दें, so we'll have delta G naught is equal to minus RT ln K. Now we have a term log and ln. So in order to move from ln to log, we use a constant that is 2.303. So this expression will become, this minus RT will be as it is. ln की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2.303 log K. The difference between ln and log is that ln का मतलब होता है log with a base e and log का मतलब होता है log with base 10. Now delta G naught
will be equal to minus 2.303 RT log K. ठीक है. Now a small idea about what is log. तो log, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम log 100 की बात करें और बेस 10 है, so it is basically what is the power of 10 so that the number will be equal to 100. Basically they are asking about x. 10 का क्या पावर हो तो 100 आ जाए. ठीक है. So obviously tell me what is the value of x. What should be the power of 10 to make it 100, to make the number 100? अरे 2. 2 है ना, तो log 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. फाइन. Yes, So sir. now what we can do, now we can say that log k को अगर हम यहाँ रखें, then it is equal to minus delta g naught divided by 2.303 RT. 2.303 RT. Now here, this is log k that is equal to this number. तो वही हम इसी तरह से पुट करेंगे, 10 to the power this much will give you k. So जो k होगा, k will be equal to 10 to the power minus delta g naught divided by 2.3 RT. 303 को 2.3 हमने अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया. So this expression is used for the calculation of k using the value of delta g naught. ठीक है. And if you know the value of delta, sorry, if you know the value of k, then you can use this value in order to get the value of delta g naught. ठीक है. Please write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna, Khadija, and Khudeja. Write quickly, guys. Amna, Khadija, and Khudeja. Just waiting for you guys. Yes, Khadija is something meaning. Khadija to the company. Now, write the next topic. That is characteristic of equilibrium constant.
characteristic of equilibrium constant. First of all, you will write number 1. The equilibrium constant is applicable only when the concentration, CONC is what? Concentration of reactant and products, when the concentration of reactant products have attained their equilibrium state. Okay, it's applicable only then. This is the first characteristic. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? एक सेकंड, इसमें हम अगर थोड़ा सा व्यू चेंज कर देते हैं तो आप लोग आराम से थोड़ा सा समझेंगे ना, लाइन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. Equilibrium constant is applicable only when the concentration of reactant and product have attained their equilibrium state. Next, you will write equilibrium constant. Equilibrium constant is independent of the initial concentration. Doesn't matter what was the initial concentration, equilibrium constant जो है ना उस पे डिपेंड नहीं करता है. The third thing is equilibrium constant. Equilibrium constant has a definite value for every reaction. At a particular temperature हो जाएगा, at a particular temperature. The fourth point is for reversible reaction. The equilibrium constant of forward reaction is the reciprocal of the equilibrium constant of reversible reaction, of the backward reaction. Reversible नहीं, backward है ना. इसका एप्लीकेशन हमने एक सवाल में भी देख लिया. ठीक है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड का रेसिप्रोकल होगा क्या? टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. फिफ्थ पॉइंट है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is independent of the presence of catalyst. What is a catalyst? Catalyst is a species that speeds up the reaction. ठीक है, so you write catalyst only speeds up the reaction and enables the reaction reach equilibrium faster. That's it. ठीक है, so write these 5 points that are the characteristic of equilibrium constant.
Raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done, guys. Waiting for Amna, Khadija, and Khudeja. Waiting for Khadija and Khudeja. Please write quickly. Raise your hand once you're done. Waiting for Khadija now. राइट, खदीजा का नहीं हुआ क्या अभी तक? खदीजा डन? शी इज नॉट इवन रिप्लाइंग गाइस. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड सी प्लीज प्रैक्टिस व्हाट एवर वी डिड टुडे, द क्वेश्चंस है ना. एंड आई विल सेंड यू असाइनमेंट में भी आपको कुछ सवाल मिलेंगे, उसको भी प्लीज कर लीजिएगा. ठीक है. सो ऋषिता, आपका एग्जाम डेट कुछ आया क्या? Yes, sir, I sent it to Learnivio. कैन यू सेंड इट टू मी आल्सो? Yes, sir, 1 second. ओके, व्हाट अबाउट यू गाइस, खदीजा एंड खुदेजा? आमना, आपका तो प्री बोर्ड है ना 18 को? Yes, sir. और बोर्ड्स फिर, मतलब बोर्ड्स नहीं, मतलब मेन एग्जामिनेशन? डेट नहीं आई अभी. अच्छा, तो प्री बोर्ड के लिहाज से तो लाइक ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स आर डन. बस यही इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा सा बचा, वो बचा हुआ है ना. तो इक्विलिब्रियम देखिए, द प्रॉब्लम विद इक्विलिब्रियम इज ना कि अगर कंप्लीट करने का हो तो इक्विलिब्रियम विल नॉट टेक 3 क्लास. ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने की बात हो तो. बट एज यू कैन सी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज टेकन व्हेन आई एम डूइंग द क्वेश्चंस. और हम अगर सवाल नहीं Yes, करेंगे sir. ना तो आप मुझसे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना. ऐसे मत, मतलब ये मत कीजिएगा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट. वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं आता ना सिलेबस कंप्लीशन में. राइट आमना? ऐसा तो नहीं ना Yes, कोई sir. आदमी सिलेबस कंप्लीट कराता है तो वो आपको एनसीईआरटी के सारे सवाल कराता हो, सारे टाइप के. तो समझिएगा इस बात को कि जो भी टाइम लग रहा है ना, वो थ्योरी में नहीं लग रहा है, वो आपको वो नए सवाल वो कराने ही पड़ेंगे हमें, है ना. अगर इक्विलिब्रियम हम पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम सही से पढ़िए आप. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम अगर अच्छे से पढ़ना है तो. अदरवाइज थ्योरी की बात करें, देख रहे हैं आप थ्योरी कितना छोटा है उसका, और उसके बाद तीनों सवाल अलग. We did 3 questions from the same topic, and the topic was so small. टॉपिक में कुछ पढ़ाना ही नहीं था, बस आपको ये बताना था कि चेंज कैसे लिखते हैं. ठीक है, और 3 सवाल किए हमने, तीनों अलग. ओके. तो सवाल, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है. अभी तो आयनिक नहीं आया है. आयनिक में यू विल हैव
एक टॉपिक से 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 8 सवाल नहीं, 8 तरह के सवाल होंगे। और एक तरह में और कितने सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल टेक टाइम इफ यू विल लेट मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड शो यू गाइस हाउ टू डू इट। अगर आप लोगों को हड़बड़ी है तो थ्योरी पढ़ा के तो नेक्स्ट, और मान लीजिए और एक क्लास नहीं, 2 क्लास और 2 क्लास में फिर खत्म हो जाएगा इक्विलिब्रियम, अगर थ्योरी की बात है तो। ठीक है आमना। सो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स आप उनको तैयार कीजिए इक्विलिब्रियम में। लास्ट नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा ली चैप्टर प्रिंसिपल, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम तक रखिए। आयनिक वाला पार्ट अभी आप छोड़ दीजिएगा, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम अभी हम पढ़ रहे हैं, और बाकी आयनिक वाला पार्ट है उसको छोड़ दीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन उससे आपके हो जाएंगे प्री बोर्ड में। उसके अलावा सारे के चैप्टर्स, सारे सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है, ठीक है। कोई डाउट हो आपको, कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, देन प्लीज लेट मी नो। देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स दैट आई हैव लेफ्ट। सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में यू हैव द बैटरी, यू हैव द सेल, ठीक है। बैटरी बैटरी और सेल वो सारी चीजें हमने क्या कर दी है, छोड़ दी है, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई हैव लेफ्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में केमिकल टेस्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लसानियस टेस्ट, ऑल ऑफ दीज टेस्ट ना, वो हमने छोड़ा हुआ है। किसी को पढ़ाया गया है, आमना, खदीजा, खुदेजा, रशिता, दोस टेस्ट्स, टेल मी। लसानियस टेस्ट वगैरह हुआ है आप लोग का? No, sir. नहीं हुआ है ना। N2, लाइक द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, वो सब No, sir. नहीं हुआ ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ है, वहीं तक हुआ है जहां तक हमने पढ़ा है, राइट। दी लास्ट पोर्शन वाज मेसोमेरिक इफेक्ट वाला तक, राइट। Yes, sir. We started hydrocarbons today. We completed the first chapter of organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें लसानियस टेस्ट नहीं आया। आई विल शो यू गाइस हम किसकी बात कर रहे हैं। टाइम भी खत्म होने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, डिस्टिलिंग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन वगैरह पढ़ाया गया, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। No, sir, not yet. नॉट येट क्या, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में है, हाइड्रोकार्बन्स में नहीं है, Oh, no, yeah, then it's not there. है ना। ये नहीं